मुल्क की हैसियत से दुनिया में अपना सिक्का जमाने वाला मुल्क पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में अपना मकाम रखता है। अगर ये कह दिया जाए कि ये दोनों शोबे पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी हैं तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि कौमी जीडीपी में लाइफ स्टॉक का शोबा 54.7% हिस्सा अदा कर रहा है, जबकि ज़राअत का हिस्सा 11.7% है, जो कि बाकी तमाम शोबों से ज्यादा है। इन दोनों शोबों का ताल्लुक देहात से है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 70% है, जो कि लाइफ स्टॉक और ज़राअत को अपनी मलकियत में लेकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Yes, livestock are terribly important to the Pakistan population simply because they provide the animal protein needs for the Pakistan population. So really we need to make sure that the livestock are produced with the greatest efficiency to yield the most food for as many Pakistanis as possible. छोटे काश्तकार लाइफ स्टॉक के शोबा को दिलो जान से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी ज़्यादातर तादाद गैर तालीम याफ्ता है, जो कि इस शोबा से मुताल्लिक तजर्बा तो रखते हैं लेकिन साइंसी उलूम से ना आशना है। यही वजह है कि लाइफ स्टॉक मईशत में अहम किरदार तो अदा कर रहा है, लेकिन अपनी असल अहलियत को बरोए कार नहीं ला रहा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी हुकूमत ने 2007 में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के साथ एक मुआहिदा किया। My name is Hassan and I'm working we are running a dairy project in Pakistan, and presently we are working with the University of Veterinary and Animal Sciences Lahore. Our major aim of this project is to enhance the productivity of smallholder farmer in Pakistan without incentive. Or the major question is like, can we enhance their productivity without any incentive? So this is one of the question, and right now we are working with more than 1,500 farmers in 7 districts of Pakistan. So our objective is to train staff who can lead farmers to develop more productive and more efficient farming operations in Pakistan. My name's David McGill. I'm from Charles Sturt University. I've been working there as a research fellow for about 6 years now. And I was initially hired to work as a research fellow and a project manager working on the Pakistan Dairy Development Project, which has been Australian aid funded. 187 million population in total, and about 9 million smallholder farmer we have. And this is the project our major emphasis are the smallholder farmers. And like how we can majority of the people have 5 to 6 animals, and via this project we are building their capacity and we are enhancing their productivity through an effective extension program. So the first couple of years I was based actually in Lahore, setting up a team and setting up the relationships with various organisations we worked with over there. And so I was doing that for a couple of years and then managed to pass on some of that management to the team over in Pakistan so they could do it themselves, and I moved back to Australia, and since then me and my boss Peter Wynn at Charles Sturt University and kind of managing it by flying in every 3 or 4 months and having Skype meetings every week. Why was our project developed? Well, a lot of the livestock are not reared in correctly and most efficiently in Pakistan. Smallholder farmers often are not well educated, and therefore they don't understand how important food and water is, and ensuring that the health of animals is at its optimum to make sure that the milk, for argument's sake, that milking animals are producing is of the highest quality for Pakistani consumers. In our project, we have adopted a very novel approach, and that is we called as is a very simple approach, is a whole family approach. Like previously in our country or in developing country, mostly women are working, but they are neglected. Like nobody is going to giving them importance. Nobody's like, we are not incorporating into the program, but within their project we bring the women and children into the program, and we are quite amazing result we achieved. Like I can quote one of the example, like in one of the district in Punjab, we run a calf raising competition among the kids of the farmer, and the results are amazing. Like there was 16 calves are in the competition, and only like the age of the children is like 10 to 15 year old.
So they raised the calf and the average gain was about 431 grams. And this was equal to all the result of all the research institution in Pakistan. लाइफ स्टॉक अपनी तर्ज का वो मुनफरिद शोबा है जो अपने से मुंसलिक अफराद की आमदन में 40 से 50% इजाफा करता है और मुश्किल वक्त में इनके लिए बैंक की हैसियत रखता है। ASLP डेयरी प्रोजेक्ट से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली इक़दाम हैं, जिनमें ऐसी ही एक कहानी जहलम के गांव नोनावाला के रिहायशी मोहसिन रजा की है। पहले मैट्रिक कीता, मैट्रिक के बाद मिसाल बुजुर्ग जड़े नो बुढ़ापे की उम्र में आ गए, बाद पुलिस भी भर्ती होया, पिछले घर का कारोबार नहीं चलने की वजह तो बात छड़ का आ गया, बात आपने जिम्मेदार दे सन 93 दे 10वें महीने 9 तारीख ने वाकया पेश आया। चारा तो मिसाल दत्था लाया और तो ट्रैक्टर लाए हुआ पहले गया तो मिसाल उसकी बारिश हुई जाए तो खोबा और ट्रैक्टर लाया 2 दत्ते धारे त्रीजा धरिया कहीं कर बल्लन लगे वो तो कपड़े बली के इंशा पर बच्चे बाह मरोड़ी के यत्तो बाह अलग होगी मंतर सब मिसाल ऐसे और जिस हालात से पेश आया बुजुर्गा कोई वो कर दे रहे कोई नाल बच्चा बड़ा वो करता रहा तो इस तरह आस्ता कोई घर आने हाथ बैठाया बहन तो कम मुश्किल है अल्लाह कीता अल्लाह बच्चे का सबब बन गया तो बात भेज देते मौसम में डाल गया मौसम स्कूल पढ़ गया तो इस बेचारे ने मुसीबत बन गई नाले पढ़ना नाले माला डंगरा डकरा देश का ही मुलाजम रख लेना तो यहीं करके सिलसिला चलाइए। भाई जान तो बाद सारा काम करना पे ट्रैक्टर चलाना पे जा आना पे है फिर रात में देर में सोना सुबह टाइम नाल उठना उस तो बाद उठ के धार करनी काट के स्कूल की तैयारी करनी स्कूल जाना उधर आके पट्टे कुतरने मालना सारा करना फिर शाम में कुतरा पाना फिर धार करनी दिन जब जल्द शाम में फारग हुई दोस्त रात में जेड़ा पढ़ाई की थी मेरा रबता हो गया उन्होंने वो आते रहे इंसानों ने बड़े बड़े काम दसे गलियां बनवाइया अगो पैप लेना उन्हें दिखने सन वो सोचे 20% जड़ा वो असी रकम देंगे अस दूसरी MPR ऐसा देंगे तो वो खुद मेहनत कर रही है तो वो भी अपनी बचत आप हो गई है मीटिंग का आके 10 ध्यान कमेटियाँ बनाओ अपनी कमेटियाँ बना के तो बात अगो न कमेटियों के जरिए नंबर पूरे करके तो देने तो उन बात पैप लेना देनी है कमेटी का हर मिसाल मैं पैप लैनी है तो मैं मैनेजर बन बैना होया जी मिसाल है तो नस्लों फर्क पै गया पहले जो ऐसा डंगर होंदा वो वजह लगाया अगो उन्हें दसिया नस्ल वाले डंगर रखो तो उन्हें फायदा उस मिसाल है दूध भी इजाफा हो गया। So the impact of our project thus far has been probably quite wide in that it's been able to train a large number of young people to become more effective extension workers. That is, workers that can work with farmers closely to achieve production goals and maximise the individual productivity of animals. जान तो बाहर पढ़ना मुश्किल हो गया था फिर ASLP डॉक्टरों के नाल टीम नाल रब्ता होया उन्होंने दसिया कि वो पढ़ाई भी करते है मालन का भी कर सारा फिर थोड़ी मुश्किल आई हम मैं मैट्रिक क्लियर कर लिया 562 नंबर ले नंबरों के लिहाज नाल तो वाला हो गया तो दूसरा उस कारोबार घर का भी ज्यादा उस हिसाब से तो अच्छा रहा यार बहुत अच्छा एक नंबर कल जरा टेक्निकल काम है ना इसको बहुत अच्छा मिसाल जिस कम लग पे ना वो करके ही जाता बाड़े खुद उस बनाए खुरलियाँ पक्कियाँ उस खुद बनाई इस तो मैं समझदा बहुत टेक्निकल है। मैं स्टडी पूरे सर्वे कॉलेज करना चाहना तो डॉक्टर ने मेरी हेल्प दी भी मदद की है आके हेल्प दा ते मैं मेरा दिल है कि मैं आ भी पढ़ना चाहना।
Oh, look, the education process is so important in getting our messages out there to farmers. But you've got to realise that 60% of the population of Pakistan is aged between 15 and 35. So really, they're the targets of our program, and the school system must be our focus, because the earlier you get to young people, the more likely that the messages that we're offering are going to be adopted by them, and in turn they will then give these messages to their parents, who are really probably the farmers. पाकिस्तान में हकीकी तरक्की इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कौमी वसाइल और हुकूमती पॉलिसी का धारा देही इलाकों में बसने वाले छोटे काश्तकारों की तरफ नहीं होगा, क्योंकि ज़राअत और लाइफ स्टॉक में फीकस पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत कम है। फीकस पैदावार बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट मियारी वसाइल के साथ साथ इल्म और आगाही की है। इन हालात के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरी है कि देही इलाकों में तौसी सरगर्मियों को असर नौ मुनज़्ज़म किया जाए, ताकि लोग जदीद और साइंसी उलूम से रोशनास होकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और अपनी माशी और माशरती ज़िंदगी को बेहतर बना सकें।